Hello students, welcome back. Today the topic is electric dipole. Electric dipole, it is a system of two equal and opposite charges separated by a certain distance. इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं. एक आपने जैसे मैंने एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया, दूसरा प्लस क्यू चार्ज ले लिया. तो ये दोनों चार्जेस जो हैं कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है. दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a certain distance is known as electric dipole. The two charges are separated by a distance 2a. This 2a is known as length of the dipole. Length of dipole, also known as dipole length. It is a vector quantity. Its direction is from minus q to plus q चार्ज. तो इस सिस्टम को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक चार्ज ले लिया -3 कूलम दिस, और यहाँ चार्ज ले लिया +3 कूलम, and the distance between these two charges is 5 centimeter. Then this system is a electric dipole. तो ये क्या क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड क्या है दोनों चार्जेस का सेम है, दैट इज 3, और पोलैरिटी क्या है अपोजिट है, एक माइनस और इधर प्लस, और वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दैट इज 5 सेंटीमीटर. तो दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये जो है -3 कूलम एंड +3 कूलम कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ, इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, एंड इसकी जो लेंथ है दैट इज नोन एज dipole length, and it is a vector quantity. Its direction is from -q charge to +q charge. For example, water, carbon dioxide, HCl, ammonia, chloroform, etc. एक और बात देखो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है. नेट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, -q + q दैट इज इक्वल टू 0. तो नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कितना है, 0 है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. इवन द नेट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0. द टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फिजिकल टर्म है, ये फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल. इट इज डिनोटेड बाय p. p इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज दैट इज q एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल दैट इज 2a. So P equal to Q 2a. P is a vector quantity. It is a vector quantity. So it can be written as P vector equal to Q 2a vector. Its direction is, the direction of electric dipole moment is same as 2a vector, that is from -q to +q चार्ज. -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ. यहाँ पर q पर भी आपने वेक्टर लगाया बिकॉज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. Its SI
unit is unit of charge is coulomb, unit of distance is meter, so its SI unit is coulomb meter. Its CGS unit is stat coulomb centimeter. Its dimensional formula is, charge का dimensional formula TA, distance that is L, which is equal to m0 L T A. Dimensional formula of electric dipole moment is m0 L T A. Now the main topic जो आज हमने करना है, that is find the electric field intensity at the axial line of an electric dipole. तो जो मेन टॉपिक है आज का वो क्या है, वो है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on the axial line of an electric dipole. आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. कहाँ फाइंड आउट करनी है? एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स एक्सियल लाइन. तो आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करना पड़ेगा. तो लो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एट पॉइंट ए एंड प्लस क्यू at point B, separated by a distance to A, and it is placed in free space. Minus q charge plus q charge separated by a distance to A. अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. कहाँ फाइंड आउट करनी है? एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन. तो इसकी एक्सियल लाइन ड्रॉ करो. लेट अस ड्रॉ एक्सियल लाइन दिस अलोंग. यहाँ पर पॉइंट ले लिया आपने P पॉइंट. This P point. Let us find electric field intensity at point P on the axial line of the dipole. Let R is the distance of the point P from the center O of the dipole. O is the center of the dipole. माइनस Q चार्ज आपने कहाँ रखा है? A पॉइंट पे. प्लस Q चार्ज कहाँ रखा है? B पॉइंट पे. तो आपने P पॉइंट कितनी दूरी पे है? R दूरी पे है. कहाँ से? सेंटर ऑफ द डाइपोल. नाउ इस पॉइंट P पे इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. इस पॉइंट P पे प्लस Q चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. लेट E नेगेटिव वेक्टर एंड E पॉजिटिव. Negative for negative charge, positive for positive charge. Let E negative vector and E positive vector be the electric field intensities at point P due to charge minus Q and plus Q respectively. Minus Q charge की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है that is E negative vector, और प्लस Q की वजह से E positive vector. तो E negative vector इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज.
आपने पीछे पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज इज टूवर्ड्स द चार्ज की तरफ होती है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज। तो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई पॉजिटिव वेक्टर दैट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज along this direction, E positive vector. Net electric field at point P is given by E vector equal to E positive vector plus E negative vector. So E is the electric field at point P, which is the resultant of E positive vector and E negative vector, and its direction is along this direction. ये आपको अभी कैलकुलेशन से पता चल पड़ेगा कि ये along px क्यों है। Now find the magnitude of E positive vector and E negative. Magnitude of E positive vector is mod of E positive vector equal to E positive equal to 1 upon 4 pi charge electric field 1 upon 4 pi epsilon naught charge E positive that is Q upon distance square. Distance is PB square and its direction is along BP. पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ होगा BP equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon PV. PV is PO minus OB. OB कितना है? Yes, O is the center of the dipole. Therefore, OB is A and AO is also A. So R plus A whole square. Now E negative mod of E negative vector equal to E negative equal to 1 upon 4 pi epsilon naught this PV. PV is R minus A, not R plus A. R minus A square. 1 upon 4 pi epsilon naught charge upon distance square. Distance of minus q charge from point P is PO plus OA, that is R plus A whole square, and its direction is along PA या PB या PO जो भी आप लिखना चाहते हैं। So this is the electric field intensity due to plus q charge, and this is the electric field intensity due to minus q charge at point P. अब इन दोनों इक्वेशन से आप देखो कि कौन सी इक्वेशन आपकी जो है वो बड़ी है। दिस E positive is greater than E negative, और clearly E positive is greater than E negative. Or no, the direction of E positive vector and E negative vector are opposite to each other, are opposite direction. So the magnitude of resultant electric field at point P is given by E equal to E positive minus E negative equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus A whole square minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R plus A whole square equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q common. So taking common, left 1 upon R minus A whole square minus 1 upon R plus A whole square
implies E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q. LCM is R minus A whole square, R plus A whole square. Then here R plus A whole square minus R minus A whole square equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q. This R minus A, R plus A, here A plus B and A minus B, this becomes R square minus A square whole square, and this becomes R square plus A square plus 2RA minus R square minus A square plus 2RA. R square with R square cancel, A square with A square cancel, left 1 upon 4 pi epsilon naught Q 4RA upon R square minus A square whole square. This can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught Q 2A and left here 2R upon R square minus A square whole square. Since Q2A equal to P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल पढ़ा है आपने ये, therefore E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P 2R upon R square minus A square whole square. So this is the electric field intensity at a point at a distance R from the center of the dipole, and this point lies on its axial line. Since electric field intensity is a vector quantity, therefore in vector form it can be written as E vector equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2R P vector upon R square minus A square whole square, and its direction is along. Thus the direction of E vector is same as that of P vector, and the direction of P vector is from minus Q charge to plus Q charge, that is along x axis. तभी यहाँ पर हमने क्या किया था, जो है E वेक्टर का जो एरो बनाया था वो along px लिया था. और दूसरी बात वो भी है कि E पॉजिटिव इज ग्रेटर देन E नेगेटिव, एंड E पॉजिटिव एंड E नेगेटिव एक्टिंग along the same line and opposite direction. Now there is a case, that is if the dipole is of small length, if the dipole is of small length, that is for short dipole. For short dipole में क्या होगा, A is less than R. short dipole means कि इसकी लेंथ क्या है, बहुत ही कम है, लेंथ ऑफ द डाइपोल इज very small, then A is less than R, therefore A square is less than R square, therefore neglecting A square as compared to R square. Therefore this equation becomes, electric field intensity becomes E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P 2R upon R square minus A square में से
ए स्क्वायर को क्या कर दिया आपने, निग्लेक्ट कर दिया, तो क्या बच गया, आर स्क्वायर, क्या बच गया, आर स्क्वायर होल रेज टू पावर स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p अपॉन आर स्क्वायर होल स्क्वायर, इट बिकम्स आर रेज टू पावर 4, और यहाँ आर है तो वो कट करके क्या रह गया आपके पास, आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a short dipole on the axial line of the dipole. Okay, thank you.